Today our topic is trigonometric identities. First of all, we will draw a right angle triangle. That is A, B and C. Angle B is right angle triangle. Okay. Now we consider it angle A. Angle A we will consider here. ABC is a right angle triangle. In right angle triangle ABC. In right angle triangle ABC. Okay. According to Pythagoras theorem we get. According to today our topic is trigonometric identities. Trigonometric identities, ठीक है? First of all, we draw a right angle triangle. Okay. That is your A, B and C. We will consider angle A. If angle A and it is your right angle, your base will be, it is your base. It will be your perpendicular. It will be your hypotenuse. Okay. Now, in right angle triangle ABC. Angle triangle ABC. According to Pythagoras theorem, we get Pythagoras theorem. ठीक है. What is your Pythagoras theorem? Hypotenuse your AC. Perpendicular is your AB, BC. And base is your ABC. That is question first. Any doubt, any problems? Okay. Yes. Dividing equation 1 by AC square. Equation 1 by yeah? AC square. बताएंगे सब डिवाइड करेंगे. हम इसको AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट में BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट में AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. ओके. First we are dividing it by AC square. It will divide by AC square. We will obtain a first trigonometric identity. That is BC square by AC square and AB square by AC square. Yes. AC square to AC square cancel out. It becomes 1. Now AC by AC whole square plus AB by AC, that is whole square. Yes. BC by AC. BC is your base, AC is your hypotenuse. What will be? Your sine A is sine A. Please tell me. Sine A is your
What is your perpendicular? BC. AC. That is cos A. Cos A is base by hypotenuse. Your base is AB. Any doubt, any problems? Now your BC by AC is sine. BC by AC is sine square A. And AB by AC is cos square A. That is your first trigonometric identities. Any doubt, any problems? Please switch on your camera. Switch on your camera. Switch on your camera. Have you done? Okay. Yes. Okay. Now dividing equation 1 by BC square. Dividing equation 1 by BC square. अब ये इक्वेशन क्या है, हमने इसको AC स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, अब BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. ओके. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1. BC square. It becomes AC square divided by BC square. BC square divided by BC square, and next is your AB square. Next is your AB square divided by BC square. AB square divided by BC square. Yes, BC square to BC square cancel out. Now it becomes EC by BC whole square. It once yes. Now AC by BC. AC by BC. What is your AC? AC is your listen. AC is your hypotenuse. BC is your base. BC is your perpendicular. Hypotenuse by perpendicular. The reciprocal of sine A, that is cosec A. That is cosec A. Any doubt, any problems? Now the next is AB by BC. AB by BC. What is your AB? AB is base. Base by perpendicular. Yes. Base by perpendicular is cot A. Okay. Yes. Now AC by BC is cosec square A. Cosec square A 1 plus cot square A. Any doubt, any problems? Your first is sin square A plus cos square A is equal to 1. Second is cosec square A is equal to 1 plus cot square A. Okay? Yes, what do you want to ask? Yes. But in this figure, I am considering angle A. Angle A. You can
You can consider angle A as theta, no problems. Okay, you can consider angle A as phi, psi, no problems. Okay. Have you ironed out any problem up to here? No, sir. Okay. May I erase it? Yes, sir. Yes, sir. The equation is your first equation is AC square is equal to BC square plus AB square. Okay. Yes. Your first equation was AC square, that is BC square plus AB square. ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है कि नहीं है? और ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है. That is your A, B and C. Now in third part, dividing equation 1 by, please tell me. Root 3. Yes. Dividing equation 1 by AB square. Okay. Now if you will divide equation 1 by AB square, we get, what will you get? BC square by AB square plus AB square by AB square. So AB square to AB square cancel out. Now it becomes yes. It is your right angle triangle. That is your A, B and C. It is your angle A. Okay. AC square is equal to BC square plus AB square. Okay. That is your equation first. Dividing equation 1. Equation 1 by AB square. We get. What do you get? AC square by AB square and BC square by AB square plus AB square by AB square. Okay. That is cancel out. It becomes 1. And please tell me AC by AB. AC by AB. AC is your hypotenuse, AB is your base. Please tell me. Sec A. Very good. Yes. Next is your BC by AB. What is your BC? BC is your perpendicular. AB is your base. Tan A. Yes. Now it becomes AC by AB whole square, BC by AB whole square plus 1. Okay. Now AC by AB, that is sec square A. BC by AB, tan square A plus 1. Okay. Sec square A is equal to tan square A plus 1. Any doubt, any problems? No, sir. Yes. Yes. We conclude that your first trigonometric identities is sin square A plus cos square A is equal to 1. Okay. Yes. Now it can also be written as sin square A is equal to
is equal to 1 minus cos square a. 1 minus cos square a is equal to sin square a होता है. Okay, and cos square a is equal to 1 minus sin square a. Okay, I can written as sin square a is equal to 1 minus cos square a and cos square a is equal to 1 minus sin square a. Okay, your next one is secant square a is equal to 1 plus tan square. one plus tan square a. Some parts, that is secant square a minus tan square a is equal to 1. Second one is secant square a minus 1 is equal to tan square a. Any doubt, any problems? Okay. Yes. Now your third one is cosecant square a is equal to 1 plus 4 square a, and cosecant square a minus 4 square a is equal to 1. I will apply all these identities in exercise 8.4. Okay. Second, that is cosecant square a minus 1 is equal to cos square a. Have you done? Yes. Do it fast. Yes, sir. Do it fast. अभी आपका कल आज से आप चले जाओगे ना, आज चले जाएंगे, फिर कल छुट्टी है, परसों फिर छुट्टी है, संडे, फिर बीच में आपने लिया संडे को काम होगा, फिर जाएंगे जन्माष्टमी पे. हाँ, अच्छा फिर आ जाओगे, फिर काफी क्या जाएंगे ना. सितंबर में नहीं है, फिर एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे. Hello. Have you done? Yes, sir. Yes. Yes. Some important trigonometric relation I have already discussed in the class, but I want to repeat it. Some important trigonometric relation. Some important trigonometric relation. Metric relations. Okay. Yes. First is your cosec A is equal to 1 by sin A. Okay. Second one is sec A is equal to 1 by cos A. Third one is cot A is equal to 1 by tan A. आप sin A को 1 by cos A ले सकते हो, cos A को 1 by sec A ले सकते हो, tan A को 1 by cot A ले सकते हो. That is inversely proportional to. Cosec A is the inversely proportional to of sin A. Sec A is inversely proportional to cos A, and cot A is inversely proportional to tan A. Okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Next is your fourth, that is tan A. Relation is sin A and cos A, that is sin A by cos A.
Okay. Fifth one is cos A. Relation is sin A and cos A. That is cos A by sin A. Any doubt, any problems? Okay. Now I will use trigonometric identities and some important relation of trigonometrics. I want to start exercise 8.4. May I start? Yes, sir. Okay. Now, how can we apply these trigonometric identity? Okay. Any doubt, any problem up to here? Yes. Exercise 8.1, 8.4, sorry. Question number first. We have to use trigonometric identities in it. Express the trigonometric ratio sin A sec A tan A. Yes, I am doing question number 2, not question number 1. Question number 2. Question number 1 as homework. Okay. Question number 2. Okay. Write all the other trigonometric ratios angle A in terms of sec A. In terms of sec A. In terms of sec A. Okay. इसका मतलब ये है we have to correlate a relation between sin A का sec A में relation क्या है, okay, cos A का sec A में relation क्या है, tan A का sec A में relation क्या है, और cosec A का sec A में relation क्या है, और cot A का sec A में relation क्या है. Okay. Now, yes. First of all, as you know that cos A is the reciprocal of sec A. Okay. Cos A is equal to 1 upon sec A. Cos A का sec A में relation ये. Am I right or wrong? Okay. Now, secant A. Using trigonometric identity we get. Using trigonometric identities we get. Yes, secant square A is equal to 1 plus tan A. होता ही नहीं होता है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Now secant square A minus 1 is equal to tan square A. Okay. And doubt, any problems? No, sir. Now square root of secant square A minus 1. tan A का secant में relation ये होगा. Okay. That is cot A. Now cot A relation. Cot A is the reciprocal of tan A. That is 1 upon tan A. And it becomes 1 upon root secant square A minus 1. Any problem? Any doubt? Yes. Next, using trigonometric identities we get. Using trigonometric identities we get. What do you get? What do you get? Yes? Sin square A cos square A is equal to 1.
Yes. Cos square A we have already find out. Cos A. Now with the help of cos A we can find out the value of sin A. That is 1 minus cos square A. Now we will put the value of cos A. Cos A. Cos A is 1 by sec A. 1 by sec square. Yes. 1 by sec A, that is whole square. Okay. Now it becomes sin square A 1 minus 1 by sec square A. Okay. LCM is Sec square. that is sec square A minus 1. It becomes sin A. Sin A is equal to square root of sin square A minus 1 sec square A. Then instead of sin square A, there should be sec square A minus 1. Yes, sec square A. Sec square A minus 1 sec square A minus 1 by sec square A. Okay. Now it can be written as sec square A minus 1 by sec A. Okay. Now we will find out the value of cos A. As you know that cosec A is the reciprocal of sin A. Yes. Yes, sir. Cosec A 1 by sin A. यहाँ पे sec square A पे आपने रूट को लगाया है, ये भी तो स्क्वायर में ही है ना। यहाँ पे sin square A नहीं है. तो होल स्क्वायर नहीं बनता। सर मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, सर मैं कह रही हूँ जैसे आपने यहाँ पे sec A पे रूट नहीं लगाया ना, sec में यहाँ पे सुनो, listen. Sec square A comes out to the square root and it becomes sec A. Yes sir, तो but sec square A ऊपर वो भी तो वो minus 1 में sec square A minus 1 है. वो अगर वहाँ पे होता है sec square A minus 1 whole square अगर होता है तो मैं sec square A minus 1 का बाहर निकाल लेता, लेकिन इंडिविजुअल है. ओके. sir, यस. sir it always like What happens? sir I'm asking you that since you are written sin square A and then it's in the denominator it's sec square A. So sir have you cut down the squares there? Yes, Kashish. Listen to me. अगर आप इसको स्क्वायर को कैंसिल करना चाहते तो ये क्या बनेगा आपके पास? ये बनेगा आपके पास secant square A by secant square A minus 1 by secant square A. ये ऐसे बनेगा. That is cancel out is 1 minus 1 by secant square A. वापस वही आ जाएगा. ये आ गया ना वापस वन कर. डिवाइड करने का फायदा क्या होगा? ओके. कॉमन तब आएगा, चलो यहाँ तक मैं बताता हूँ आपको क्या करना है. कॉमन बताता हूँ कॉमन कैसे आता है. हैव यू डन और नॉट? Yes, sir. Done, sir. आप इसका रेसिप्रोकल लिख लीजिए इसमें. cosec A you can write as sec A by square root of secant square A minus 1. That is reciprocal of it. Okay? Yes sir. Yes. Have you done? Yes, sir. Yes, sir. May I erase it? Yes, sir. Yes. Yes sir. Yes. Prati, you are just asking to me that अगर मेरे पास ऐसे होता जैसे secant square A minus secant raised to power 4 A होता और यहाँ पे मेरे पास क्या है secant square A.
यहाँ पे जब तक क्या है, मैं इसको जब तक ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, जब तक इसमें पूरे में कॉमन नहीं आएगा कुछ, ठीक है, क्योंकि ये तो सिंगल इंडिविजुअल है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इंडिविजुअल है मेरे पास, तो डायरेक्ट मैं बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन इसका रिलेशन जो है वो इसके साथ कंप्लीट है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों में कॉमन आना चाहिए। इसे मान लो यहाँ पे क्या है, सीकेंड स्क्वायर ए, ये कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे इसको लिखा 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिखा मैंने सीकेंड स्क्वायर ए, ओके, दैट इज कैंसिल आउट, एंड 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर ए, दैट इज tan स्क्वायर ए। अब ये इंटीग्रल बन गया, यहाँ पे इसको मैं tan ये ले सकता हूँ, ऐसे होता है। ऐसे नहीं होता, जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने सीकेंड स्क्वायर ए -1 है, इसको मैं इसको बाहर कैसे कर सकता हूँ, मैं ये सकता हूँ इसको, अगर ये ओनली यहाँ पे ऐसे होता, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर ए, दैट इज सीकेंड ए, वेरी नो प्रॉब्लम, ओके। लेकिन अगर मेरे पास प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम ये क्या है, सीकेंड स्क्वायर ए है -1 है, अब ये बाहर नहीं आ सकता। जब हमारे पास क्या है, मोनोमियल होता है ना, मोनोमियल में कोई प्रॉब्लम नहीं, मोनोमियल में तो स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, जब तक पूरे में कॉमन नहीं आएगा कोई भी चीज, तब तक उसको बाहर नहीं निकाल सकते, और वो भी स्क्वायर में होना चाहिए। वो भी स्क्वायर के अंदर होना चाहिए, स्क्वायर कॉमन होना चाहिए। अगर स्क्वायर कॉमन नहीं है, जैसे मान लो क्या है, सपोज कीजिए आपके पास स्क्वायर रूट है, आपके पास यहाँ पे 4x है, -4 है, +16 है, चलो कॉमन भी ये आपके पास 16, ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है, चलो अब यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4x, इट बिकम्स 1 माइनस x प्लस 4x क्यूब। अब ये बाहर नहीं आ सकता, ये कोई 2 बाहर आ सकता है, इसको हम कहते हैं 2, ये x हो गया 1 माइनस x प्लस 4x क्यूब, ये ऐसे होगा, क्योंकि अगर x स्क्वायर पे स्क्वायर होता तो बाहर आता है। कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? यस, जब तक आपके पास क्या है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, थ्रू आउट कॉमन होगा, और थ्रू आउट कॉमन होने के बाद उस पे अगर स्क्वायर है तो उसके रूट से बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर 2 हैज बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 1 एज ए होमवर्क, Yes, sir. question number 1 same as it is question number 2, can you do in homework? Yes, sir. Now question number 3, question number 3, in question number 3 we will apply exercise 8.3 as well as exercise 8.4। इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल as well as ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोथ अप्लाई होगी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, evaluate sin square 63 plus sin square 27 degree plus cos square 70 degree plus cos square 73 degree। Listen to me, sin square a plus cos square a equal to होता है, Yes, sir. यहाँ पे ये क्या है, Yes. ये क्या है, ये क्या होता है, ये क्या है, व्हाट इज ए है, यस, व्हाट इज ए, एंगल, एंगल, यस,
गाना वाला तो Angle should be equal or not? अभी कब होता है Equal. Yes, correct, sir. Equal. भाई एंगल इक्वल होना चाहिए ना भाई sin square a plus cos square a is equal to 1 sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ऐसा तो नहीं है sin square a plus cos square theta is equal to 1 होता है भाई तो लिख सकता हूं इसको sin square a plus cos square theta is equal to 1 लिख सकता हूं ये ठीक है ये जल्दी बोलिए angle should be equal yes it means there is drop यहाँ पे हमारे पास क्या है sin square 63 है sin square 27 डिग्री है अब क्या बोलिए मैं क्या बता रहा अगर मैं आ गई ना make the angle same Yes, sir. है भाई how can you make the angle same by complementary angles by using complementary angles okay yes sin square sin किसमें चेंज होता है sin change into Cos. cos okay yes I can written as that is cos square 90 minus 63 am I right or wrong Yes, sir. That is right. sin square 27 degree okay now sin cos square change into sin square 90 minus 17 degree and cos square 73 degree okay yes as you know that cos of 90 minus theta is equal to sin theta and sin of 90 minus theta is equal to cos theta any doubt any problems okay now it becomes cos square 90 minus 63 27 degree that is sin square 27 degree now it becomes sin square 73 degree and cos square 73 degree now angle is same or not yes sin square theta plus cos square theta is equal to 1 now it becomes 1 by 1 that is equal to 1 any doubt any problems No, sir.